नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अगस्त सीरीज़ के रोल ओवर डेटा के बारे में, सीजनैलिटी एनालिसिस फॉर सितंबर और कुछ की सेक्टर्स जो कि फोकस में रह सकते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। अगस्त डेरिवेटिव सीरीज़ के दौरान निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन फिर भी इंडेक्स एक नैरो बैंड ऑफ 770 पॉइंट्स के अंदर ही रहा, जो 24,409 और 25,179 के बीच ऑसिलेट करता रहा। ये प्राइस एक्शन एक डेलिकेट टग ऑफ वॉर दिखाता है बुल्स और बेयर्स के बीच। जहां बुल्स को डोमेस्टिक डेवलपमेंट से सपोर्ट मिला, वही बेयर्स ग्लोबल अनसर्टनटीज़ की वजह से प्रेशर बना रहे थे। मिडवे थ्रू दी मंथ मार्केट सेंटिमेंट को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला जब एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया का सॉवरन आउटलुक अपग्रेड किया। इस डिसीजन ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स किया इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के अनाउंसमेंट ने, जो दिवाली तक इम्प्लीमेंट होने वाले, डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में नई एंथुजियाज्म जगा दी। However, this optimism proved short-lived. In the final leg of the series, the Nifty witnessed a sharp reversal, shedding more than 650 points in just 5 trading sessions. The downturn was largely triggered by escalating geopolitical tensions, most notably US President Donald Trump's decision to impose an additional 25% tariffs on Indian goods. The move rattled investor confidence, sparked fears of trade disruptions, and raised concerns over the potential impact on corporate earnings and India's export competitiveness. Finally, the Nifty futures ended the series with a marginal decline of 0.88%, reflecting the balance between early optimism and late month headwinds. On the derivatives front, the rollover of Nifty futures surged to an 83.63% in August, not only higher than July's 75.71, but also comfortably above the 3-month average of 79.62%. The number of shares rolled surged to 169 lakhs compared to 164 lakhs last month. Meanwhile, the rollover cost edged higher to 0.63%, exceeding the 3-month average of 0.43%, suggesting participants were willing to pay a premium to carry forward their positions into the September series. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने फ्रंटलाइन इंडाइसेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। इंडेक्स ने अगस्त सीरीज़ को 3.44% के स्टीप लॉस के साथ ख़त्म किया, जिसमें हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स की लगातार वीकनेस काफ़ी बड़ा रीज़न रही। डेरिवेटिव्स पर्सपेक्टिव से देखें तो रोलओवर 80.90% तक जंप कर गया, जो जुलाई के 77.98% से ऊपर है और 3 मंथ एवरेज 78.21% से भी हायर है। The rollover cost surged to 0.83%, higher than the 3 months average of 0.42%. The market-wide rollover stood at 89%, slightly lower than the 90% recorded in the previous series. Talking about the long-short ratio, in the new derivative series, the FI's long-short ratio slipped to 8.24%. Notably, since July 11, the ratio has consistently remained below the 20% mark, marking the longest stretch in the recent past, where FIs have maintained a predominantly short positioning. This sustained bearish bias highlights the cautious stance of an overseas investors amid persistent global uncertainties and domestic market volatility. आगे चल के 200 डे ईएमए का जोन 24,300 टू 24,250 इंडेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर 24,250 के नीचे कोई सस्टेनेबल मूव होता है तो इंडेक्स में और करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो 24,000 तक जा सकता है। वही अपसाइड में 24,700 टू 24,750 का जोन इंडेक्स के लिए क्रूशियल हर्डल का काम करेगा। Talking about seasonality, tracking seasonality over the past 18 years, the September month has often exhibited a mixed trend for Nifty. On 10 occasions, the index has concluded on a positive note with an average gain of 6.78%, while on 8 occasions it has ended on a negative note with an average loss of 2.65%. The average return for Nifty in the September series has been 2.59%. Over the past 18 years, September has consistently shown an average volatility of 9% for the Nifty index. Talking about the seasonality for September in Bank Nifty. So Bank Nifty has also shown a positive trend in September over the past 18 years. Out of these, it closed positively 11 times with an average gain of 9.77%, while ending negatively 7 times with an average loss of 4.44%. The average return for Bank Nifty in September series has been 4.25%. However, Bank Nifty has demonstrated an average volatility of approximately 13.05% for the past 18 years. Talking about the key sectors to watch, so potentially outperforming sectors based on the rollover data are automobile, consumer durables and FMCG,
While the potential underperforming sectors based on the rollover data are private banks, financial services, defense, oil and gas, media, PSC, CPSC, capital market, and realty. So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.